अलग में है जंग जब तक तब तक तंग में जरूब लगे तो फिर रंगी रंग में खुद के खिलाफ करूं ऐलान जंग में करूं रक्स मलंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सियासत डेली। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान है मुदस्सिर भाई ए मो बूशे, जो एक सूफ़ी हिप हॉप आर्टिस्ट है। भाई वेलकम टू द सियासत डेली। तो पहला सवाल आपसे यही है कि व्हाट इज़ सूफ़ी हिप हॉप? Sufism is one thing, Yeah. hip hop is one thing. So as I told you earlier, basically hip hop is a medium of expression. Yeah. It's a expression of self, right? So everybody can express themselves in their own way, the way their personalities reflect. Yeah. Right. So for me, Sufism has been a very important part of my life since last 7-8 years. Okay. So if I want to write about anything, or if I want to make a song, that is the subject that I am most interested in. Okay. So that is the way hip hop lets me reflect my thoughts and my emotions. Yeah. In that way. Yeah. Because usually hip hop is perceived as something very polar opposite to Sufism, right? Right. Sufism is more about spiritual purification or self-reflection, being more Right. conscious of yourself. Yeah. But hip hop is more about like rock and roll and Right. drugs, crime, वगैरह Yes, वगैरह. it is the way it is represented. See, in Okay. India, we did not get. There's no culture of like a hip hop culture in India. Yeah. In India, hip hop music came with the coming of internet. Okay. So we just look at what the music is bringing. Yeah. It's pop music basically, and the pop culture associated to it. Yeah. So that is why you see that polarity. But other than that, a hip hop artist is basically trying to reflect his thoughts. It's a meditative process for a Yeah. hip hop artist, for a rap artist. It's a very meditative process of writing poetry. Okay. And then see, rap is one of the elements of hip hop. Rap का मतलब है rhythm and poetry. जी. तो सूफी poets भी हुए, हाँ. जो सूफी poetry लिख रहे हैं. जी. यहाँ पर भी poetry हो रही है, but rhythm में हो रही है. हाँ. तो इट कैन बी ऑफ एनी, कुछ भी कंटेंट हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि पीपल जस्ट टॉक अबाउट गर्ल्स और ड्रग्स और स्टफ लाइक दैट. इट कैन बी एनीथिंग, देयर ओन लाइफ. तो जैसे सूफी स्कॉलर्स पोएट्री लिखते थे, वैसे में यू आर राइटिंग रैप. या इट्स द सेम थिंग. So how did you get into it? मतलब how did you get into Sufism and how did you get into hip hop, and at what point did you think कि अब ये दो mix कर सकता है? Alright, so for that you have, it's like a very long Yeah. answer I need to give. So I started rapping when I was 14 years old. Okay. Right, and then I released 2-3 mixtapes until I was 24. And at this point in time, I wanted to know myself. Okay. Very scattered, being part of the culture, and I was looking for a deeper sense of purpose in my life. Okay. So I decided to like stop everything. I stopped music, and then I was looking for a spiritual guide to actually let me answer my questions. Okay. All the type of questions that we all have, right? What is the purpose of life? Why am I here? What am I doing? Yeah. Right. So for me, at that point of time, it was very important for me to ask these questions. So I started reading about Hindu spirituality, Vedic philosophy, also Christian mysticism, all types of religions I started exploring. सब पढ़ रहा हूँ मैं. Sufism भी पढ़ रहा हूँ. At one point of time, I realized that I need a guide to help me on the path. Yeah. I found my spiritual master, learned the techniques and the practice of Sufism through him. Okay. And it's been a journey, man. Like 6, 7, 8 years I've been on the path. And then there have been certain realizations about myself. I got to know about myself better. Yeah. Right. So after I had that clarity of thought, I was like, all right, if I want to make a song, this is what it's going to be. Okay. Right. Because if I'm taking my pen, this is the only thing that I'm able to write. Yeah. Because there is nothing else significant in my life. Yeah. So for somebody who's on a path very seriously, right, he's Yeah. having these profound experiences. And being an artist, I am so sensitive that I'm constantly gathering information. Yeah. Right. अपन यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं गए तो पूरा मुआयना करते हुए जाते हैं और कई चीज़ें इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में आती. राइट. और वैसे ही एज अ सूफी स्टूडेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, as an artist, if I'm willing to write something, that is the only thing that I'm able to write. So for me, it was very important that I bring this content in the scene so that people get a clearer idea of what hip hop is,
Yeah. and at the same time introduce to the youngins, to the young audiences, Yeah. that these are the true questions that you need to be asking. Yeah. Because eventually this is where you're going to end up. Yeah. Everybody, we all end up there. Yeah. So that was the thing. So who is your spiritual guide या फिर कोई physical teacher है or is it an author from hundreds of years No, I ago? have a physical Okay. guide. So are you from spiritual any guide. particular Sufi order like Naqshbandiya or I'm from a Qadriya? Naqshbandi order. Okay. Yeah. So at what point did you think you can like mix hip hop and Sufism and like just bring it on to the mainstream? Right. See, you have to understand, before I became part of the Sufi Yeah. brotherhood, Yeah. I was an artist. Yeah. Right. Then I quit my music and became a part of this community. Right. And at this point of time, if I want to write anything or make a song, right, I'm like, Sufism is something that has allowed me to know myself. Okay. And hip hop is letting me express that. Yeah. So it just came naturally, man. Okay. So how has the response of the audiences in Hyderabad been to your art? Hyderabad, definitely people are loving it. People are actually shocked, Oh, yeah. to see this, this blend of Sufism with hip hop, Yeah. and the type of compositions that are there. It's, the album Soldier, that is a reggae album actually. Okay. So reggae music is basically a Qawwali music for the Caribbeans. Okay. So the Jamaican people, Yeah, it's Qawwali yeah. music. Yeah, I've heard हमारे लिए that. Qawwali है. हाँ. उनके लिए जो है सो reggae music है. जी. So they're talking about spiritual stuff. They're talking about God and how we need to put our trust on Him. Yeah. चर्च में gospel होता ना, जी. वहीं से roots वहीं हैं उसके. जी. ऐसा है. So, So for me it was very comfortable using this genre Yeah. to reflect my thoughts. Yeah. So what are the types of criticisms that you have come across throughout your journey? Throughout my journey, see, back in the day when we were imitating the West, Yeah. when we were young, listening to hip hop music, we're just trying to imitate that stuff. Yeah. So we used to definitely get a lot of criticism from at least the community. Okay. कि भाई ये क्या है? हाँ. For sure. थोड़ा देसी करो. नहीं वैसे नहीं. I'm talking about the Orthodox community. अच्छा. Like what are you guys doing? हाँ हाँ हाँ. समझ रहे? जी. So, but then since I've evolved as a person and I've changed as a person, and that type of stuff is reflecting in my music now, like pretty mature contents, really heavy stuff, man. जी. So people like it, man. घर वालों का कैसा था response when you decided कि you want this to be your life? See, my parents have always been supportive. Okay. Some type of pressure is there. वो खानदान वालों से थोड़ा बहुत ये वो रहता है influence, so they are always worried about that. Yeah. Right. But now they see my work, what type of stuff I'm actually writing, what is the message that I'm putting across. Yeah. Right. I could have been making any type of commercial songs, right? But I've decided to use this message, Yeah. right? So they understand that and they are pretty supportive. My parents have always been very supportive. न्यूज़ में आपका एक आर्टिकल आया था जहाँ पे दे सेड कि you also rap about गंगा जमुनी तहजीब. So how did you come up with that? इसको कैसा आप सूफीज़म और हिप हॉप से कंबाइन करके? देखिए अब वो ये ऐसा है कि हम देख रहे हैं हमारे हालात कैसे हैं इंडिया में, ठीक है. लॉट ऑफ हेट इज़ बीइंग स्प्रेड. टीवी में एक प्रोपेगेंडा है. हकीकत आपको मेरे को मालूम है. कैमरा के पीछे सिद्धांत है जी. और मैं हम मुदस्सिर बैठा हुआ हूँ और हम साथ में काम कर रहे हैं. समझ रहे हो आप? सो दिस इज़ द रियलिटी. बट देन देयर इज़ दिस फेक प्रोपेगेंडा व्हिच इज शोन इन द मीडिया. राइट. सो अब मेरे एक गाना है एल्बम में, गाने का नाम है गूंजने दो, लेट इट एको. राइट. उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड and how we are living happily in a community, how we need to understand each other. Lyrics they go like, शुगर गुजारी में मशगूल है जो, मुस्कुराने की वजह नहीं ढूंढते वो, समझना है ज़रूरी एक दूसरे को, इश्क के सुरताल को गूंजने दो. एक रियलिटी है जो प्रोपेगेंडा आपको बता रहा है, जो रियलिटी है नहीं जस्ट प्रोपेगेंडा, और एक है जो हकीकत है, और एक है जो हम चाह रहे हैं कि हकीकत हो, हकीकत एम्पलीफाई होकर दिखे कि ये हकीकत है. तो गाने में वो बताए. जी. सो टू दोज हु डोंट नो कि आपका आर्ट क्या है, आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आप थोड़ा एक एग्जांपल ऑफ योर लिरिक्स पेश कर सकेंगे हमारे सामने? Sure. So the first song from the album, it's called as Madari. Okay. Right. उसका verse है, it goes like,
सो थोड़ा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, जी जी नहीं तो समझ में आने वाला नहीं हाँ बेशक किसको भी। पहली बात सूफीज़म है, हाँ दूसरी बात रेगे म्यूजिक है। हाँ तो बैकग्राउंड ये है कि दिस वर्स आई स्टार्टेड राइटिंग when I started my spiritual path. So these are the questions that I was having in my mind. ओके I'm asking God या कि I want to see you, I want to know you, I want to have a relationship with you. या तो उसी से ये लिखना शुरू किया। जी So it goes something like, कैसे हो सके ज़ाहिर हकीकत आपकी, करने लगा मैं पाबंदी हर नमाज की, ढका सर और बदला मेरा लिबास भी, फिर भी क्यों लगे कि बाकी रह गया कुछ आज भी। जी जुस्तुजू से गुफ्तगू कईयों से मैं हुआ रूबरू, लगे गलत इन्हें सवाल ही, जी जी हुजूर है आरज़ू मैं देखूं नूर बावजू, दिन दहाड़े खुली आँख से। जी तो ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है जी जी कि भाई अल्लाह को पूछ रहे हैं कि मेरे को देखना है, हाँ पर मैं आई एम यूजिंग दैट एज अ मेटाफॉर जी कि आई एम सेइंग कि आई वांट टू एक्सपीरियंस। जी किताबों से सिखाया जा रहा है वो एक चीज़ है, जी मम्मी पापा सिखाए वो और एक चीज़ है, मस्जिद में सिखा रहे वो और एक चीज़ है, जी सही है वो अपनी जगह पे, जी बट देन आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। जी अब एज अ आर्टिस्ट आई एम सेंसिटिव टू एज आई सेड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जी तो ऑन दैट लेवल आई वांट टू एक्सपीरियंस रादर देन कि भाई बुक में से है, बुक में से हम देखें और उसको बिलीव करें। जी सूफिज़म का मकसद ही वही तो है कि एक्सपीरियंस बिटवीन यू एंड गॉड। या It basically allows you to experience Yeah. the inner dimension of a human being या that you cannot see. जी आपकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू शेयर सम थिंग्स कि क्या था एंड व्हाई डिड यू पिक सूफीज़म। See, basically I'm from a Muslim background, Yeah. so Sufism was my comfort zone. ओके But I've read the Hindu philosophy और बाकी के दूसरे mystical traditions में explore किया हुआ हूँ, जी read किया हुआ हूँ. What I've realized is everybody is talking about the same thing. या सूफिज़म में आई हैव माई पर्सनल कंफर्ट जोन बिकॉज हमारी लैंग्वेज में हो रही है सब जी। चीज़ें। जी सो जब अल्लामा इकबाल की पोएम आई थी शिकवा जवाब शिकवा, पहले फुल क्रिटिसिज्म हुआ एंड देन जवाब शिकवा आया बाद एवरीवन जस्ट वेंट क्रेजी कि अरे भाई क्या है ये, पीपल वर क्राइंग। सो डू यू एक्सपेक्ट समथिंग कि ये इम्पैक्ट है सूफी पोएट्री, अब सूफी हिप हॉप का भी मे बी दिस माइट बी द इम्पैक्ट What type बिकॉज of यू हैव अ मैसेज कि मतलब लोगों के अंदर एक अवेकनिंग आती, राइट? Definitely. So are you expecting something like this from your art? Yes, that is the whole purpose, man. Yeah. The whole purpose is to create a spark in the listener. And you have to understand, we have our demographics, no? YouTube Yeah. channel पे मालूम होता ना भाई, जी आपके कितने क्या demographics है, क्या है, क्या नहीं है. So we have like 14-year-olds to 24-year-olds. okay And they are constantly consuming music. yeah कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं दिन भर जी। में। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल ऑफ अस, ऑल आर्टिस्ट हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स टू एक्चुअली यू नो प्रोजेक्ट गुड स्टफ ऑन द यूथ, yeah बिकॉज सी आर्ट इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी, एट द सेम टाइम इट अपलिफ्ट द सोसाइटी। yeah समझ रहे हैं आप? जी। द टाइप ऑफ सॉन्ग्स दैट यू सी आर बिकमिंग लाइक चार्ट बस्टर्स, yeah राइट? यू आस्क कि भाई अरे ये गाना कितना फेमस, ऐसा फेमस कैसा हो गया, जी right? But then at the end of the day, it is reflecting the state of the society. yeah समझ रहे हो? ये एक चीज़ वो होगी। मंटो की एक लाइन थी कि मेरी कहानियाँ तो एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। Exactly, exactly. So that is the whole purpose. मेरा purpose यही है म्यूजिक करना कि भाई I just create that small spark. फिर बाकी का तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है वो क्या हो रहा है। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस आगे चल के आपकी जर्नी में आप क्या क्या एक्सपेक्ट करके, और एंड हाउ वाज द रिसेप्शन फ्रॉम फेलो आर्टिस्ट, बिकॉज खासतौर से इट इज समथिंग न्यू एंड वियर्ड, राइट? Yes, yes. So how was the For them it's very smooth. ओके For them it's in their language it's like अरे it's too smooth. हाँ It's not hard. देखो भाई Yeah. हर इंसान के कई वो रहते ना भाई क्या जी। बोलते कई साइड्स रहते, जी ठीक है? अब दिन भर तो हार्ड नहीं रहते, हाँ जहाँ हार्ड होना है वहाँ हार्ड रहते। जी छोटे बच्चे से आप मुस्कुरा के बात करेंगे, जी समझ रहे? जी। सो व्हाट हैज बिकम ऑफ हिप हॉप इज दैट देयर इज जस्ट वन इमोशन व्हिच इज बीइंग स्प्रेड, Yeah. दिस हार्डकोर हार्ड। Yeah, मतलब वो divine वाला, हार्ड है, हाँ। हर चीज़ में हार्ड है, हाँ हार्ड रहना ज़रूरी हो गया आर्टिस्ट। जी बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आल्सो कैन बी हार्ड इन योर क्राफ्टमैनशिप, या इन योर लिरिसिज्म, इन योर टेक्निकलिटी, Yeah. समझ रहे ना? वहाँ पे भी वो हो सकता। तो फेलो आर्टिस्ट तो डेफिनेटली सी द थिंग इज टू राइट दिस टाइप ऑफ स्टफ यू हैव टू एक्चुअली
you cannot make Sufi music Yeah. if you're not part of the group. Okay. Until and unless you understand what's going on, जी. what's on there. जी. So artists तो definitely they get blown by the whole technicality, Yeah. by the lyricism and by the message that it has. जी. But more than the artist community, I've seen a very good response from the audiences, Yeah. from the youth, also from the non-Muslim community. When they listen to this music, they're like, "Wow, man, this is something that I resonate with. This is something so fresh, something that we've not heard before." जी. So how do you see the scene evolving in Hyderabad? आगे चल के आप क्या क्या expect कर रहे हैं? सीन तो हर आर्टिस्ट का एक एक स्टाइल है जी. और एक एक तरीके से और एक कंटेंट को पकड़ के चल रहे हैं सब लोग, ठीक है. It will definitely evolve. It will definitely be big one day for sure. जी. बिकॉज देखो अभी तो सिर्फ हिंदी में है फिल्म, जी. इंडिया में सिर्फ हिंदी में है. बट इफ़ यू सी देयर लाइक सो मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया, या. तो हर लैंग्वेज में तो होना ही होना है. जी. वो ब्रेक थ्रू मिलना है हर लैंग्वेज को हिप हॉप में. जी. ऐसा है. तो हैदराबाद में भी डेफिनेटली वो आएगा. आर्टिस्ट है जो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं. बट या द थिंग इज डिसिप्लिन नहीं है आर्टिस्ट के पास. अच्छा. हैदराबाद के आर्टिस्टों के पास वैसा डिसिप्लिन नहीं है. जी. पैशन बहुत है, बट देन डिसिप्लिन के साथ में इफ़ यू पुट लॉट ऑफ आवर्स इनटू इट, जितने आवर्स डालते रहेंगे तो आपका एक स्किल ऐसे लेवल पे डेवलप होगा कि आप उसको प्रेजेंट कर सकेंगे कि भाई लोग उंगली ना उठा पाए. जी. यू हैव टू बी रेडी. नो, या. पैशन है, टैलेंट है, एक चीज़ है. यू हैव टू बी रेडी टू प्रेजेंट योर स्टफ टू द नेशन. या. ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. तो दिस वाज मो बोशे. अगर आपका कंटेंट अगर किसी को चेकआउट करना है तो क्या है आपका पेज? स्पॉटिफाई पे जो सर्च फॉर मो बूशेर, MOBOUCHER. इंस्टाग्राम के लिंक्स वीडियो वगैरह में डाल देंगे भाई. जी. तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा देखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली. दिस उसामा हज़ारी. सारी आफियत में था काफी, दस्ते खुदा बनी.